So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 19th April. So I hope you are aware that every day at 3 p.m. we are having the Hindu analysis, which is taken by Govind sir, except on Saturday, because on Saturday I take the class. So let us begin. Am I audible, visible? Is everything fine? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? If yes, then please write yes in the comments so that we can start our session. Is my voice reaching? Just hold on for a second. Okay, yes, fine. So let us begin. Today is 19th April and that is Saturday, and let us begin with important articles on the first page. First page में article है Rubio hints at US exit if Ukraine peace deal stalls. So पहले तो ये बताओ कि who is Rubio? किसकी बात? Who is this person? What is his full name and what is his designation? Because I am sure you must be knowing it. तो आप बताओ कि ये कौन है, इनका पूरा नाम क्या है और उनका क्या डेसिग्नेशन है, किस पोस्ट पर हुआ है. Then here, this we will discuss. Then here is an article talking about 74 killed in US attack on Yemen, says Houthis. So we'll be discussing a little bit about this. And of course, PM Modi had a telephonic conversation with Elon Musk. So we'll discuss a little bit about that as well. So let us begin with the first article. Rubio hints at US exit. Who is Rubio? Please tell me. आपको पता होना चाहिए. Till now, you should be knowing who is Rubio. So who is Marco Rubio? He is actually US Secretary of State. US Secretary of State. What is US Secretary of State? So in India, this will be equivalent to what? India may US equivalent to, you can say, foreign minister in India. Okay. So in America, there is no foreign minister. Instead, they use the word Secretary of State. Okay. जिस तरह इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, उसी तरह अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं. ठीक है. सो मार्को रूबियो इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ही हैड गॉन टू पेरिस. ठीक है. एंड हैड टॉक्स विद अलोंग विद, देखो अगर आप देखोगे पढ़ोगे, सो ही हैड गॉन टू पेरिस एंड टॉक्स वाज देयर. यूएस, यूक्रेनियन ऑफिसर्स, यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट हियर. ठीक है. सो जो सबसे राइट में है ना, मार्को रूबियो राइट. सो ये वाले मार्को रूबियो है. ओके, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एंड फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है ना. फिर ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी है, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर है. सो ये तीनों की मीटिंग हुई एंड देयर वर अदर पीपल. सो ही हैड गॉन टू पेरिस. तो फ्रांस में पेरिस जगह है. Here the meeting happened. So why the meeting was actually to try to resolve the Russia-Ukraine conflict. I'm sure you must be aware of Russia-Ukraine conflict. अगर आपको Russia-Ukraine conflict के बारे में नहीं पता है, so just go to the YouTube and search this. Russia-Ukraine war career launcher. If you do not know much about it, you search it, you will get a video. There's a brown color thumbnail. Go and watch about in detail about Russia-Ukraine war there. ठीक है. किस रीजन से, what was the reason for the beginning of the war, किस कारण से वॉर शुरू हुई, ये सब हमने ना वहां बताया है. ओके. तो अगर आप देखोगे, बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प केम टू पावर, when Joe Biden was the president, actually the USA was helping a lot. So USA was very much there in support of Ukraine to fight against Russia. Okay. तो US उस टाइम पर यूक्रेन को काफी सपोर्ट कर रहे थे रशिया से वॉर करने में. But now when Donald Trump came to power, what has happened? Actually, Donald Trump is not very much interested in investing much money in Ukraine. Okay, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जो यूक्रेन में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. So they are avoiding it. इसीलिए इन लोगों ने कहा, the US Secretary of State, that is the foreign minister of Donald Trump, है ना. मार्को रूबियो कौन हुए? और डोनाल्ड ट्रम्प के फॉरेन मिनिस्टर होंगे. तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मीटिंग कुछ फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो हम लोग अपना निकल लेंगे, है ना. So if actually the conflict is not resolved, then we will not actually will not be very much engaged in the war, and it's not an America's war. ठीक है. मतलब ये कि we will not support much future in Ukraine and all. ठीक है. So he spoke in Paris after landmark talks with US, Ukrainian and European officials. Produce outlines for steps towards peace and appear to make some long-awaited progress. A meeting is expected in London next week, and Mr. Rubio suggests that it could be decisive in determining if the Trump administration continues its involvement.
अभी तो एक पेरिस में मीटिंग हुई और नेक्स्ट वीक में एक लंदन में, हाँ यूके में मीटिंग होगी, ठीक है. So that is what you have to understand, and he has categorically said, the foreign minister of USA, Donald Trump, has clearly said that we will quickly decide. Basically, he has actually given an idea that we are not going to indulge too much in this war and we will withdraw. We are now reaching a point where we need to decide whether this is even possible or not. Because if it's nothing, then I think we are just going to move on. It's not our war and all. He said administration wants to decide in a matter of days. मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रम्प had already said, and his the US president, and of course जो foreign minister है वो उन्हीं के minister है. So the foreign minister has said what the Donald Trump has said, that we are actually not very much interested in Russia-Ukraine war. We will not support Ukraine much, and we will try to come out of it. So we will not support much. मतलब ये कि क्योंकि यूक्रेन फाइट कर रहा था अमेरिका की हेल्प से, है ना. So America and the European countries were supporting Ukraine, and that is why it was fighting. So maybe if USA will withdraw it, then of course maybe it would be very difficult for Ukraine to fight against Russia. Okay. So Mr. Rubio's comments step up pressure on both sides to reach a peace deal, even as the US and Ukraine made progress on a mineral agreement, etc. ठीक है. हालांकि US और यूक्रेन ने कुछ मिनरल एग्रीमेंट वगैरह किया, बट ये साफ क्लियरली कह दिया कि हम लोग जल्दी फौरन ही, in a matter of days we will decide, and very soon we will decide that what we have to do. बेसिकली इशारों में इन्होंने कह दिया कि we are not very much concerned in this war. ठीक है. Now I have some question regarding this. Please tell me this region for which the war started. इस region का नाम क्या है? Please tell me. I have already taught in my classes previously. I am waiting for the response. आप जाके देख लेना, YouTube पे जाना, सर्च करना, Russia Ukraine war career launcher, Russia Ukraine war career launcher. You will get the video. A brown color thumbnail video would be there. Luhansk and Donetsk. Yes, Priyanshi, now you are right. Actually, इस region को कहते हैं Donbass region. This is Donbass region. इसका north वाले हिस्सा को कहते हैं Luhansk, and the southern region is called as Donetsk. So Luhansk and Donetsk together is actually Donbass region. And here is Crimea. Someone had written Crimea also. ठीक है. See, आप लोगों को पता होना चाहिए. And this is sea. This is called as Azov Sea. Okay. ठीक है. Now, and this is a river. There's a river which goes like this. What is the name of that river? On Kiev. Kiev is actually the capital. ये भी पूछा हुआ एग्जाम में. Kiev ऐसे भी लिखते हैं. Sometimes it is written like this. The capital of Ukraine. So this river, what is the name of this river, which is going like this? Crimea was annexed by Russia in 2014. Yeah, right, Priyanshi. You're right. Please tell me the name of the river that I have made here. और यहाँ पे बहुत famous nuclear power plant है. Europe's largest nuclear power plant. Please tell me that also. These are very much in the news. ये अक्सर news में रहता है. So the name of the nuclear power plant is. I'm giving you time. Please answer. Zaporizhia. Very good. Priyanshi, go ahead. You're right. Zaporizhia. एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लेना, इसी तरह का समथिंग स्पेलिंग है, थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर होगा, बट Zaporizhia is there. ठीक है. And the name of the river is actually चेरनोबिल. हाँ नहीं, चेरनोबिल ऊपर में यहाँ पे नहीं पे था, कीव के आसपास. ठीक है. यहाँ ये वाला जो है ना Zaporizhia है. ठीक है. और name of the river is नीपर है ना. That is what you should know. Yes, Rishi Sachdeva, you are right. Zaporizhia nuclear power plant. So these are the things. मैंने already पूरा एक separate video बनाया है. Just go and search Russia Ukraine war career launcher on YouTube. You will get a brown color thumbnail. उसमें आप जाके देख लेना. Please watch it. है ना. That is very very important. And I hope you are aware Ukraine के president का नाम you should be knowing. What is the currency? These were things asked in the previous year. Currency का नाम क्या है? President क्या है? What was the profession of the president? हाँ वो जो river वो नीपर है. Yes, Priyanshi Goyal and Rishi Sachdeva. The river that I was talking about is नीपर. है ना. D से लिखते DNIE. Yes, he was earlier a comedian. His name is Vladimir Zelensky, है ना. And the currency is Hryvnia, है ना.
ये सब पता होना चाहिए, just have an idea about it. Okay, let's move on. एक चीज और है, since we are here talking about US, Ukrainian and European officials. So who are European officials? These are basically European Union officers, है ना. और यूरोपियन यूनियन पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, प्लीज वॉच इट, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर यू विल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस यूरोपियन यूनियन. अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या पढ़ते होगे तो आपने यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन प्रेसिडेंट, ये सब नाम टर्म सुना होगा. सो आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. सो बेसिकली दीज आर ग्रुपिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ये यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनकी ग्रुपिंग से, हालांकि सारे कंट्रीज, नॉट ऑल यूरोपियन कंट्रीज आर हियर, आर प्रेजेंट इन यूरोपियन यूनियन, बट रफली यू कैन से, है ना. And I had discussed about Brexit also. ये सब मैंने इस क्लास में बताया है. So please go and watch it. 27 nations. Very good, Krishi Sachdeva. Acha, can you please tell me, we had earlier 28 nations, one country came out, and now we are having 27 nations in European Union. Which is that country which came out? In the last 4 or 5 years, I would say in the last 10 years, it was very much in the news. Yes, UK. Yes. राइट, उसको ब्रेक्सिट कहते हैं ना, ब्रिटेन एग्जिटिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्सिट टर्म वी हैड डिस्कस्ड हियर. ठीक है. यस यस, हितांश सागर, कृषि सचदेवा, यू आर राइट. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. 74 killed in US attack on Yemen, says Houthis. Now let me talk about this little bit. I hope you are aware of this that here actually the Israel-Palestine conflict is happening, Israel and Gaza and all. So basically what happened is, this is actually which canal? Please tell me. So if any ship which is bound from, which is coming from Israel, Israel supported, let's say USA or UK or any country which is supporting Israel, if this is coming in this region, it is being attacked by Houthis from Yemen in this region. Yes, this is Suez Canal. Very good. हाँ, वो ये वाला सी जो है, रेड सी. वेरी गुड, समवन हैज रिटन रेड सी. दिस इज रेड सी. ये गल्फ ऑफ एडन है. और ये वाला को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज व्हिच स्ट्रेट? सो इजराइल से अगर इजराइल बाउंड शिप इज कमिंग थ्रू सुएज कैनाल, यहाँ पे सुएज कैनाल है, पतला सा रास्ता है. सो दिस इज बीइंग अटैक्ड हियर एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब. ठीक है. एंड दिस स्ट्रेट कनेक्ट्स, आप कह सकते हो यहाँ पे अरेबियन सी है, ये वाला अरेबियन सी हुआ है ना, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है ना. तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब. सो इफ एनी अमेरिकन शिप और एनी अदर शिप, अमेरिकन बाउंड, इजरायली बाउंड शिप्स आर देयर. सो यमन के वेस्ट में देयर इज अ organization called as Houthis which are ruling and they are attacking the ships, American bound ships, etc. Strait of Bab al-Mandab. Yes, Krishi Sachdeva, you're right. So this is very much in the news. So what had happened was America is also attacking it back, and also here it was the news that 74 killed in US attack and all, and that is why. And Iran backed group. So Houthis ko jo it is said ki Iran is supporting the Houthis, like Iran was supporting an organization in Lebanon. What is the name of that organization? बताओ, ये भी न्यूज में था. What is the name of the organization Iran was supporting in Lebanon? It was also in the news in the last 6-7 months. Its main chief died, I think, last year. Not Houthi. Houthi तो यहाँ Yemen में, मैंने बताया ना. Iran is supporting Houthis in Yemen. There is one organization in Lebanon which is supported by Iran. Hezbollah. I'm sure you must have read in the news. So Hezbollah chief also died. I would say last year, somewhere in October, it was in the news. So pata hona chahiye. These things you should be knowing about. Similarly, in Gaza, there is an organization Hamas that was also very much in the news. So these things were in the news. अगर आपको नहीं पता है, after the class is over, read about it. इस पर question आए, Hamas पर previous questions भी आए. Go and read Wikipedia. You will realize कि there have been questions. Islamic resistance movement इसको कहते हैं. यही question आया था एक जगह. PYQ. So go and read about Hamas, Hezbollah, Houthis. Okay, because it is in the news in the last 6, 7, 8 months. Okay, now on the first page there was another article talking about this. Actually, Prime Minister had a telephonic conversation with
businessman Elon Musk. अच्छा, Elon Musk के पास is actually it's a businessman, you can say. He's having a company like SpaceX, आपने नाम सुना होगा. Then he's having a company like now Twitter, which is called as X. ठीक है, और एक बहुत सारी कंपनी है, टेस्ला, एक बोइंग करके समथिंग कंपनी है, नॉट वो वाली बोइंग नहीं, बट एक और करके एक कंपनी है, बोरिंग कर कुछ कंपनी करके नाम है ना, स्टारलिंक, यस स्टारलिंक, और एक बोरिंग करके, प्लीज चेक इट, आई डोंट रिमेंबर इट्स फुल नेम. ठीक है, सो इनके पास 5-6 और कंपनी बहुत फेमस है. एक अभी उन्होंने एक्स ने ये बनाया है, ग्रोक कुछ नाम से, एआई वगैरह, बोरिंग कंपनी, राइट? हाँ, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, बोरिंग, yes. So this is what you should be knowing. Now Elon Musk is having one department. Now after Donald Trump came to power, he's having one department of the US government with him. What is the name of that department? उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है. हाँ, चिप कंपनी भी उनके पास है. हाँ, तो अब एक बार एलॉन मस्क की जितनी फेमस कंपनीज को पढ़ लीजिए. हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज, है ना? यस, प्रियांशी गोयल, राइट? कृषि सचदेवा. हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव किया जाता है? बाय मतलब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को निकाल दिए गए नौकरी से. बेसिकली इन गवर्नमेंट जॉब्स a lot of people were fired so as to save money, right? That is what the idea is. तो ये भी काफी न्यूज में था. Okay, the next is Prime Minister Narendra Modi on Friday said he had a phone call with US presidential advisor. He's a presidential advisor also, है ना? So these are the things. It was in the news. एक पीछे बात हुई टेस्ला. तो टेस्ला का फर्स्ट शोरूम कहाँ ओपन हो रहा है इंडिया में? Can anyone tell me? टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, its first showroom will open in Mumbai. Very good, Priyashi, great. हाँ, it is getting open very soon in Mumbai. ठीक है, आप देख सकते हो ना, टेस्ला to pay 35 lakh monthly rate for Mumbai and all. Okay, हाँ, the next one more thing is, एक Starlink की बात हो रही थी कि we may take Starlink, use Starlink, which is actually a satellite based internet communication, but अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ. So let us see without but Starlink थोड़ा सा को पता होना चाहिए कि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कम्युनिकेशन है ना, सैटेलाइट बेस्ड. तो उसमें बहुत सारे कैविएट्स भी है. मतलब कैविएट्स ये है कि ऑफ कोर्स even without tower or satellite से direct communication can happen, so it can be misused, etc, etc. खैर, let's talk about editorials. तो editorial, the main editorial है, let's talk about this, page number 8 में, restoration of sanity to the constitutional system. नहीं, स्टारलिंक को अभी अप्रूवल नहीं मिला है as far as they collaborate with Airtel. I am not 100% sure, but please check it. अभी फाइनल अप्रूवल शायद नहीं मिला है. Okay, now let's talk about this one. I hope you are aware that actually recently क्या हुआ था? There was one incident where there was something was done by, देखो actually मैं बताता हूँ. When we talk about state level, हाँ, so state में क्या था? We are talking about the state of Tamil Nadu. So the Tamil Nadu Legislative Assembly. And legislative assembly and the members are called as MLAs, member of legislative assembly. So they passed bills. I think somewhere around 10 bills were passed. It went to the governor. So what governor did was governor resent it back. But the rule says, and you have to tell me which article says this, that if the legislative assembly again passes it, then the governor is supposed to sign it. But next time when actually the legislative assembly passed, the governor sent it to the president for approval. Yes. Not governor Kerala, नहीं, Tamil Nadu की बात ही है. Mr. R. N. Ravi was the governor, right? Yes, article 200. Yes, लिखा कृषि सचदेवा, प्रियांशी गोयल, you are right. हाँ. So article 200 में लिखा था कि आपको साइन कर देना चाहिए अगर if you have got the bill again. But he sent for the presidential reference and all. उसके बाद काफी हंगामा हो गया and all कि the governor is not signing because it is in opposition rule state sector etc. So the matter went to the Supreme Court and the Supreme Court ने ही लिमिट लगा दी, टाइमलाइन सेट कर दिया कि in case if you have to withhold the assent, you have to reject the bill, then you have to do it in 1 month. And if in case of withholding assent contrary to the advice of the state cabinet, then 3 months. And in case of bill presented for reconsideration, अगर आपको दोबारा कंसिडरेशन के लिए भेजा जाए, again if the legislative assembly sends, then you have to approve it in 1 month. Basically what happened was the judiciary invented something which was not mentioned in the constitution.
Okay. Now, whether it is right or not is actually a debatable topic, and we'll discuss that. Okay, I'll give you both the arguments. So, सबसे पहले हम लोग Article 200 पे जाते हैं. So, when we talk about Article 200, so it talks about it. ठीक है. The legislative assembly of a state passes a bill, then the governor have the power. तो क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? Either shall declare the assent, or withholds बताओ तो reject कर देना bill को, है ना? And if he can return it also. Not money bill, है ना? Other than money bill, any bill can be returned back, other except money bill, है ना? Or he can reserve it to the presidential assent also, है ना? तो यहाँ नीचे लिखा है presidential assent also. ठीक है? But if he has sent the bill and it has been sent by by house, if the bill again approves it, then the governor shall not withhold the assent. मतलब क्या है? कि अगर governor ने वापस भेजा और legislative assembly ने फिर sign करके भेज दिया, है ना? If the governor has returned the bill to the house and the house again sends back, then the governor is supposed to sign it, है ना? मतलब इस केस में और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इशारा यही दिया जा रहा है आर्टिकल 200 में. ठीक है ना? He shall not withhold the assent means he should approve it. Okay. एक और तो मैंने बता दी कि रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट वगैरह, जैसे अगर पावर ऑफ हाई कोर्ट या आर्टिकल 254 के अंदर वाला मामला है, देन इट कैन रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट आल्सो. द प्रॉब्लम वाज हियर that when the bill actually was sent back again by the legislative assembly, he actually sent it to the presidential reference instead of signing it. Okay, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, whether we are talking about at presidential level or governor level, that what we call it as pocket veto भी एक होता है. देखो पहले तो मैं कुछ वीटोस बताता हूँ. देखो ये वाला कि अगर रिजेक्ट कर दिया, असेंट कर दिया तो ठीक है, तो वीटो तो हुआ नहीं है. विथहोल्ड असेंट में तो रिजेक्ट कर देना, तो ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया, है ना? अगर वापस भेजना है तो एक क्वालिफाइड वीटो हुआ. इन फर्स्ट टाइम यू हैव सेंट इट बैक एंड अगेन द सेकंड टाइम इफ यू कम यू हैव टू साइन इट. एक होता है पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो आई विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज़ इन आर्टिकल 200 nowhere it is written कि आपको इतना दिन के अंदर कर ही लेना. देयर इज नो लाइक इफ द गवर्नर डज नॉट डू इट व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन. वो बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, आई विल नॉट सेंड इट बैक, आई विल नॉट रिटर्न इट, आई विल नॉट, बस मैं बैठा रहूंगा बिल को लेकर. दैट्स कॉल्ड एज पॉकेट वीटो. सो बेसिकली दिस इज आल्सो द पावर इन केस ऑफ सिटिंग ऑन द बिल्स, राइट? सो व्हाट हैपेंड वाज, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेट कर दिया टाइमलाइन. सो दोस हु आर सपोर्टिंग इट, दे आर सेइंग इट कि यस इट इज राइट बिकॉज़ legislative assembly is elected by the people and it represents the will of the people, because legislative assembly, the MLAs are directly elected by the people, whereas the governor is just an appointed by the center. There is no election to the governor. The president mein to at least indirect elections happen, but in case of governor there is no election. So if the governor is sitting on the bills, if it is using pocket veto, then it is an insult or it is going against the will of the people. तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया इस आर्गुमेंट को, उन लोगों ने ये कहा कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करी और गवर्नर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो वो विल ऑफ द पीपल यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है. इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज. That is why many people supported it, that yes, governor should have done it, otherwise it will go against the idea of it. Now there is one more angle which actually is being discussed, जो उसका दूसरा एस्पेक्ट है. Is actually first you tell me the constitution bench should have minimum how many members? ये किसी को पता है? How many members should be there in the constitution bench? It's mentioned in article 145 clause 3 also. Yeah. 3, 7, 5. Yes, Rekha, you are right. 5 minimum 5 होने चाहिए. That is what I was asking. Okay. तो अगर आप ये देखोगे, let me talk about it. इसी पर हंगामा एक्चुअली हुआ और कौन चला गया 145? I must have mentioned. Yes, Article 145 rules of the court. This is in the Indian Constitution. अब उसका clause 1 है, clause 3 पढ़ो. The minimum number of judges who are set for deciding any case involving substantial question of law as the interpretation of Constitution shall be 5 minimum. इंडिया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट कर रहे हो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एटलीस्ट मिनिमम 5 जजेस बेंच होने चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज आर्टिकल 200 में नोवेयर मेंशन द डेडलाइंस. डेडलाइन नहीं मेंशन था कि 1 महीने के अंदर कर लेना, 2 महीने के अंदर. नोवेयर मेंशन. नाउ यू आर एडिंग समथिंग न्यू. दिस इज एन इनोवेशन, जुडिशियल इनोवेशन,
and like basic structure is also a judicial innovation and all. You're adding, interpreting something new in the constitution, and that cannot be done by a 2-judge bench. Rather, it should be done minimum by a 5-judge bench. हाँ, तो इसमें जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये हुआ था कि 2-जज बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया और ये कहा कि लिमिट लगा दिया, which is actually, so some those who were criticizing it, they said that this is what we call it as judicial activism, yeah, judicial overreach. Overreach means it is crossing the boundary and it is going in the executive domain, मतलब अपनी limit power से के beyond चला गया ना. So that was the criticism also. So there are 2 aspects of it and I have discussed both aspects. तो मतलब criticism ये था कि 2-judge bench की जगह बड़ी bench बनानी चाहिए थी. They should have sent it to the CGI saying that this matter involves interpretation of the constitution and that is why they should have said कि the CGI should make a larger bench. कि अगर हम timeline set करेंगे प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए तो फिर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए बड़ी बेंच 5-judge बेंच मिनिमम होनी चाहिए, 2-judge बेंच ये ऑर्डर नहीं पास कर सकती. ठीक है, सो दीस वर एक्चुअली द आर्गुमेंट्स दैट वर गिवन. ठीक है, सही बता रहे हैं ना, लैंडमार्क जजमेंट एंड ऑल है ना, 200 आर्टिकल एंड ऑल. जेबी पादीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन ये सीजीआई भी बनेंगे फ्यूचर में जाके, जस्टिस जेबी पादीवाला. खैर, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो दैट दे हैव सेट इट. और दूसरी चीज क्या किया, उन लोगों ने अप्रूव कर दिया कि द बिल हैज बीन गिवन एसेंट. जुडिशरी ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये एसेंट है ये बिल का. ओके, दैट इज व्हाट. सो बेसिकली देयर आर एक्चुअली क्या, यस कृषि सचदेवा यू आर राइट, आप लिख सकते हो. सो देयर आर 2 आर्गुमेंट्स, दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि आई हैव गिवन बोथ द आर्गुमेंट्स. ऑन वन आर्गुमेंट वाज दैट basically the governor should have acted swiftly. Why was governor waiting? And of course it was hampering the system and all, because legislative assembly represents the will of the people. Why was governor or president blocking it? And the other hand, the people said no, it should have been done by the larger bench, not by the 2-judge bench and all. Okay, so these are the arguments. I have given both arguments. Whether you like it or not is your personal opinion. Okay. Now एक चीज और हुई थी, वो हुई थी आर्टिकल 142. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, because you are adding something new in the constitution which was not mentioned by the constitution itself, है ना, you are adding saying कि 1 month 2 month 3 months का time दे रहे हो. So it means, and that is why for doing this the Supreme Court used this 142. The Supreme Court in exercise of its any jurisdiction can pass any order or decree to do complete justice. ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैज अनलिमिटेड पावर. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस. ओके, मैं आपको डिफरेंट आर्गुमेंट बता रहा हूँ, लेटेस्ट को लिख रहा है ना. तो आर्टिकल 142 क्या होता है कि इफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट हैव एनी पावर इन एनी अदर केस और फ्रॉम इज नॉट एबल टू डिराइव एनी पावर फ्रॉम एनी अदर आर्टिकल, या अगर लग रहा है कि किसी भी आर्टिकल से ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन यूज 142. मतलब सुप्रीम 142 का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज अनलिमिटेड पावर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, है ना. इसलिए कि आप ये कैसे कह सकते हो कोई नई चीज ऐड कर दे. सो ऑफ कोर्स दे यूज दिस 142. इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एट places, ठीक है, but some people say कि it is required, otherwise the president or the governor will keep on rejecting it and it will hamper the governance etc. तो दोनों साइड का आर्गुमेंट है, we are not going in that detail, ठीक है. But 142 has been used by the Supreme Court in the past. तो अगर आप देखोगे टर्म अगर लिखा है doing complete justice, pass any order or decree, ये सब वर्ड लिखा है, so we are talking about 142, ठीक है. That is what you should know, ठीक है. हाँ, अब इसमें ना 2-3 डिबेट्स होती है, जुडिशियल रिव्यू वर्सेस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड ऑल. थोड़ा सा मैं बताता हूँ. तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? द मेन आइडिया बिहाइंड जुडिशियल रिव्यू इज द डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट. यही तो होता है जुडिशियल रिव्यू. अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन लिया एंड द जुडिशरी फाइंड्स इट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन स्ट्राइक इट डाउन. Even the legislature, the law made by the parliament can be struck down by the Supreme Court. That is the idea of judicial review. इसीलिए इंडिया में एक डिबेट होता है, तो मैं बताता हूँ. There's a debate between parliamentary sovereignty versus constitutional supremacy. I'm sure you must have heard this. इंडिया में parliamentary sovereignty नहीं होता है. This is there in UK. So if a UK parliament makes a law
it cannot be quashed by the court. सिर्फ executive decision को किया सकता है. If a decision is taken by the executive, it can be quashed by the court. But parliamentary law generally it's not there. But India we have constitutional supremacy. So the law made by the parliament, the law made by the state legislature, the decision taken by the executive, governor, president can be challenged in the court. So in India we are having constitutional supremacy. Even the basic, इसीलिए तो parliament concept like the basic structure constitution, that even the parliament cannot destroy the basic structure of the constitution, even if it has full majority, because if it wants to destroy it, then the Supreme Court will strike it down. तो ये सब debate होता रहता है. Some people say there should be parliamentary sovereignty, judiciary should not have that much power. Some people say no, there should be constitutional supremacy, where the judiciary, जहाँ constitutional supremacy होगा तो judiciary का power ज़्यादा होगा. That you have to understand. Why? Because there is a very famous question. Custodian of the constitution. क्या होगा आंसर? Who is considered as the custodian of the constitution? Then what should be the answer? अगर ये आपसे पूछा जाए, custodian, the guardian, protector. हाँ, तो आंसर इज सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अगर जुडिशियरी लिखा तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड मार्क सुप्रीम कोर्ट. तो whenever there is a debate between parliamentary sovereignty, which is there in UK, versus constitutional supremacy, ठीक है, अगर ये वाली चीज है तो यहाँ पर जुडिशियरी ऑटोमेटिकली ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, will have more power as compared to parliamentary sovereignty, है ना. So I hope you are aware that India and there is a concept of judicial review, which is a basic structure and all. ठीक है, तो ये सब डिबेट्स होते रहते हैं. आपको एक रफ आइडिया लग गया कि कैसे है, क्या क्या चीजें हैं. दैट इज मोर देन एनफ. देखो 143 है ना, ये उन्होंने बताया भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो एटलीस्ट 5 जज बेंच होना चाहिए. 2 जज ने कैसे ऑर्डर पास कर दिया, दीस आर द थिंग्स. इस साइड में एक आर्टिकल था, आई होप यू आर अवेयर. एक एएनआई को कुछ मामला चला था, कुछ न्यूज़ एजेंसी थी एएनआई दैट हैड फाइल्ड अ पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट, है ना, टू रिमूव सम आर्टिकल्स ऑफ विकिपीडिया. सो दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड इट, देन लेटर सुप्रीम कोर्ट स्टेट दिस ऑर्डर. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. इसमें बस देखो एक दो चीज आपको जानना है. आर्टिकल 19 यू शुड बी नोइंग, फ्री स्पीच, है ना, द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा. द नेक्स्ट इज स्टीयरिंग द डिकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर. पहले ये बताओ, देखो इसमें ना बहुत सारे फैक्ट्स यूज किया गया, वो नहीं पता होना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए. ठीक है, decarbonization means we are moving towards a technology which will cause less pollution. Okay, logistics sector means transportation sector. It means we are trying our best that in transportation sector the pollution level should be lesser. You know, pollution कम कर रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रक्स वगैरह में, और या जो उस टाइप की टेक्नोलॉजी है ना. देन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट विकसित भारत बाय 2047. देखो, from 2022 to 2047, this period is called as what? Defined by government as what? ये 75 years of independence है, ये 100 years of independence है. What is the period between this called? And 2047 target है to achieve विकसित भारत. हाँ, the term used is अमृत काल. Yes, कृषि सचदेवा, प्रियांशी गोयल, रेखा, you are right. हाँ, अमृत काल. ठीक है, so इसी में बता रहे हैं the authors are saying, I think one is female and one is male. So actually the authors are saying basically they are talking about it कि core lies inclusive development, है ना, every citizen, every business, every region. इसमें कुछ है नहीं बताने का. Net zero carbon emission. Yes, this is what we have to discuss. अच्छा, I hope you are aware of this. In COP26 in 2022, PM Modi talked about Panchamrit, the 5 pledges, 5 goals of or 5 pledges of Indian government regarding environment. ठीक है, तो सबसे पहला ये था reaching 500 gigawatt of non-fossil fuel by 2030, 50% of energy requirement from renewable energy use करेंगे 2030 तक, reduction of total carbon emission 1 billion tons. इसमें क्या लगाओ, पेड़ लगाना पड़ेगा, trees and forest cover we have to increase. Reduction of carbon intensity by 45%, है ना, तो इसके लिए electric vehicles वगैरह की तरफ जा रहे हैं, है ना. Then achieving net zero emission by 2070. This is the most important. The last one is very, very important. Net zero का मतलब होता है कि whatever we are producing carbon dioxide or the harmful gases, we should be absorbing it back through the help of forest, plants, etc. है ना, यानी जितना pollution कर रहे हैं उसी को हमको absorb कर लेना है 2070 तक, ऐसा पहुंच जाना है. ठीक है, that is what the idea is. तो देखो यहाँ पे उन्होंने author ने भी use किया ना,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जितना पॉल्यूशन करें, मान लीजिए इंडस्ट्री से वी आर कॉजिंग पॉल्यूशन, मान लो 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड वी आर प्रोड्यूसिंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, है ना. सो इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा से, then we should absorb back the same 100 ton of carbon dioxide by the help of forest. इस दोनों को बराबर हो जाना चाहिए. This is called as net zero emission. Okay. So बराबर कैसे करना होगा, अभी ये वाला ज्यादा है, we are causing more pollution than we are absorbing it. तो एक काम ये करना है कि we should reduce it, electric vehicles and different technologies we are using, or we are moving towards renewable energy so that we should produce less pollution. Similarly, we should have more afforestation, है ना, तब ना दोनों बराबर होगा etc. So these are the things you should be knowing about. ऐसे इतना परसेंटेज वगैरह नहीं याद रखना है, जो नंबर्स यूज किया गया ये सब नहीं पता होना चाहिए, है ना. इतना एक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, है ना. एलएनजी थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी है बायोफ्यूल्स पे. हाँ, nowadays we are using biofuels, methanols, and liquefied natural gas. Then actually we are moving towards actually renewable energy, hydrogen, green hydrogen. आपने ये सब नाम सुना होगा, है ना. We are moving towards this blue hydrogen, green hydrogen, electric vehicles we are moving towards. So these are the things being talked about. Then एक और आर्टिकल थी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड, मतलब क्या होता है, अपने ही आपको नुकसान पहुंचाना. LNG means liquefied natural gas. Liquefied natural gas. ठीक है, LNG को बच्चा पूछ रहा था, ठीक है. Fine. So what happened was Donald Trump has actually revoked and he cancelled the tax exemption status of Harvard University, and it has cancelled a lot of funds also. Actually हुआ ये था, देखो मैं दिखाता हूँ. This is USA. यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, न्यूयॉर्क के ऊपर एक जगह है मैसाचुसेट्स, ठीक है. यहाँ आपको वेरी फेमस यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यू विल फाइंड, ठीक है. इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फंड दिया जाता था. सो डोनाल्ड ट्रम्प हैड एक्चुअली विथहेल्ड दैट, फ्रोज इन वो जो $2.2 बिलियन का फंड है उसको फ्रीज कर दिएगा, और टैक्स एग्जेम्पशन मिला था. मींस द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज नॉट सपोज्ड टू पे द टैक्सेस ऑन इट्स रेवेन्यूज, बट नाउ दैट टैक्स एग्जेम्पशन इज गॉन. नाउ इट हैज टू पे द टैक्सेस आल्सो. ओके. हाँ, तो ये रीजन है. तो रीजन क्या है, बिकॉज एक्चुअली द डोनाल्ड ट्रम्प वाज नॉट हैप्पी विद द because it is said that Donald Trump was trying to interfere in the management of Harvard University, which was not liked by Harvard University. So Harvard had refused to comply with White House order. White House मतलब US president के order को नहीं सुना regarding hiring, admission and teaching practices. They said कि we want to be independent. It should not be interfered by anyone else. तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि नहीं, this is not correct, and say कि left wing का है, anti-Semitic है, and that is why actually he stopped it and all. So these are the things, it was in the news. इसलिए आपको पता होना चाहिए. Then Indian astronauts set to fly for a space in my एक मिशन है Axiom mission, है ना, Axiom 4 mission. This is a US mission, NASA वगैरह का मिशन है. इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला. He will be going there. And why is important? Because future में he will be going in Gaganyaan mission also. I hope you are aware what is Gaganyaan. Gaganyaan is India's future planned mission that we will be sending humans to space. जिसको कहेंगे crewed mission. That is what you should be knowing, है ना. है ना, NASA to fly astronaut designate Subhanshu Shukla, है ना. इसको पढ़िएगा. This is NASA, US Space Agency, and Axiom mission के अंदर under they'll be sending it, and they'll be taking the help of SpaceX, because SpaceX will also be taking part with the help of its Falcon 9 rocket. Yes. That is what you should know. Second Indian to spacewalk, right, Krishi? Krishi Sardeva. Okay. The next is 2 Kuno National Park cheetahs to be moved to Gandhi Sagar National Sanctuary, which is also in Madhya Pradesh. So I hope you are aware the actually क्या है, Madhya Pradesh है ये. This is Madhya Pradesh. है ना, Madhya Pradesh में यहाँ पर एक national park है, Kuno National Park, from where cheetahs were brought from Namibia in South Africa continent and South Africa. इस दो जगह से चीतास लाया गया था. I hope you are aware, 1 or 2 years back. So now some of them is going to be moved to Gandhi Sagar. तो ये वाला कूनो नेशनल पार्क के ऊपर वाला और ये वाला गांधी सागर नेशनल पार्क, ठीक है. सो कुछ को मूव कराया जाएगा. That is what you should know. And a finance ministry gets several new appointees. So we are having seeing new revenue secretary and all. So basically there is ACC, appointment committee of cabinet. Appointment
कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? सो प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, सो दीज आर द टू पीपल, टू मिनिस्टर्स, ठीक है। So basically, they decide who should be the top bureaucrats, top officers, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, कौन कौन होते हैं, तो एक अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट डिसाइड करती है। So now Mr. Arvind Srivastava will be the new revenue secretary, है ना? So that is what you should be knowing about. The next is opposition parties criticizes Vice President Adamka Srivastava, तो ये अपना पढ़ ले रहे हैं particularly. Names given in the article, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी नए बनाए गए, उनका नाम क्या है? समटाइम्स दीस आर आस्क्ड, ठीक है। एक और याद रखना, डोयन ऑफ एंजियोप्लास्टी मैथ्यू सैमुअल कालारिचकल नो मोर। एंजियोप्लास्टी समझते हो? सो एक्चुअली एंजियोप्लास्टी मतलब होता है इट इज रिलेटेड विद हार्ट डिजीज। जब किसी को हार्ट डिजीज होती है तो एक तरह का प्रोसीजर होता है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, जिससे ब्लॉकेज वगैरह को ओपन किया जाता है। That is what you should be knowing in coronary artery disease etc. तो इनके बहुत बड़े फेमस फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहते थे इंडिया में, इनका नाम था मैथ्यू सैमुअल कालारिचकल एंड ही डाइड रिसेंटली। डोइन मतलब तो सेंस में कि मतलब फादर की सेंस में, ये बहुत बड़ा नाम, हम कहते हैं ना कि अपने फील्ड में खिलाड़ी, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, लाइक दैट। सो ही वाज एक्चुअली द मेन पर्सन बिहाइंड इट, दैट इज व्हाट यू कॉल, है ना? सो ही डाइड recently, and that is why you should be knowing it. And he performed the first angioplasty in India in 1996, almost 40 years back or 39 years back. So he was from Kerala. Pioneer के sense में, doyen or pioneer, right? So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.